Starting chapter number 5. This is fuel. So what is fuel? Fossil fuel, coal, petrol. So you'll have to study first about coal, petrol. So starting with coal. Solid, liquid and gas. 3 types of fuels we are using. Solid fuel, coal and coke. Coal, coke, charcoal. These type of fuels are solid fuels. Liquid fuels are petrol, diesel, kerosene. Gaseous fuels, water gas, producer gas, coal gas. These type of different type of gases. Okay, so these are the different type of coal. Now, for burning some fuel, what do we need? The fuel itself, the heat and the oxygen. This completes the triangle. So if you break one of the side, the triangle will be broken, circuit is broken and the fire will be extinguished. So these things are we are learning from that fire brigade also. Sometimes fire brigade giving us training. Fire brigade came to BCI college also, they give training. So they gave training. All our staffs and faculty were there, some students also were there. There is a training that how to extinguish fire. For our protection, you need to know how to extinguish fire. So according to them only, I am telling you, there is a 3-side triangle. For any fire, we need all the 3 sides, fuel, heat and oxygen. If you can curtail one of the side, the circuit will be broken and you will find that fire will be extinguished automatically. So, sometimes in the village area, if there is a fire and all the huts are under fire, so you know what village people are doing? গ্রামে একটা অনেকগুলো বাড়ি পাশাপাশি গায়ে গায়ে লেগে আছে বাড়িগুলো, ছোট ছোট বাড়ি, মানে সেগুলো এরকম বড় বড় বাড়ি নয়, ছোট ছোট হাট আছে, থ্যাচড হাউস। এক কথা এটার নাম হচ্ছে থ্যাচড হাউস। মানে বুঝো থ্যাচড হাউস নয় জানো কি বলো, মাথায় খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়ি। So they are all attached to each other. Suppose there is a fire, so all this thatched house one after another will catch fire. So what is the best way to stop this fire, spreading of fire? কি করে জানো ফায়ার এতে গ্রামে কি করে? মাঝখানে বাড়ির ছাদটাকে উড়িয়ে দেয়, মাঝখানে বাড়ির চালটাকে উড়িয়ে দেয়। তাতে কি হবে? কন্ট্যাক্ট ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। তো পরপর আগুন বাড়িতে আগুন লেগে যাচ্ছে, একটার মাঝখানে চালটাকে উড়িয়ে ফেলে দিল, তাহলে ওটার আগুনটা এগোতে পারবে না, মাঝখানে ফায়ারটা পাবে না কোনো প্লেস। মাটিতে তো জ্বলবে না, জ্বলবে তো খড়, চালটা ফেলে দিয়ে হয়ে গেল। সো দ্যাট মিনস উই আর ব্রেকিং দ্য ফুয়েল পার্ট। কি করছি? ফুয়েলটাকে বর্ণ করছি। ওকে, উই আর sometimes spraying water, spreading water, some sparkling some water. What we are doing there? Removing the heat portion. Removing the heat portion. We are giving sometimes we are giving foam. আগুনের মধ্যে foam use হয় না, তাহলে কি হয়? That will detach oxygen from the air. If you give some foam will cover the fire, it will not come in contact of oxygen. So at least one side if you break, the fire will be extinguished. These are minimum knowledge actually. Okay. Classification of fuel. Primary fuel, secondary fuel. Primary fuel and secondary fuel. What is primary fuel? That we are getting directly from nature, like coal. Coal is a primary fuel because we are just taking it out and directly just using it. Secondary, coke. Coke is not available in nature. You are taking coal and making coke out of it. That is secondary. Petroleum crude oil, that is primary. But we prepare petrol, diesel, kerosene, fragmented portion, separation, then a secondary. Okay, so primary and secondary fuel. So primary fuel, solid, wood, coal, lignite, bituminous, anthracite, these are all coal type, different type of coal type. And charcoal coke, there is a derived. Petroleum crude oil is liquid, that is primary. And we are getting gasoline, kerosene, diesel, petrol.
So these are all prepared. Synthetic way it is made. Refinery is used. We are making it out of some refinery. Then it is secondary. Natural gas is primary because we are getting from the some underground source. From underground resource we can get some gas, that is natural gas. But these things we are making, producer gas, water gas, coal gas, LPG, biogas, that we are making. Okay, so these wood, coal, lignite, these are different type of solid fuel that people are using. Wood, coal, lignite, bituminous, anthracite, peat. These are all different type of coal and solid fuel. Coal and wood, these are solid fuels. Okay, next liquid fuel. Next is liquid fuel. Petrol, kerosene, diesel, these are liquid fuel. Gaseous, now next is requirement of a good fuel. How do you just level that this is a good fuel or this is not that good fuel? So that depends on its calorific value. The most important property of a fuel is calorific value. Calorific value means how much energy we get out of it. That is calorific value. So now by the definition, according to definition, unit amount of fuel if you burn, the amount of energy released. Okay, that's unit amount of fuel that we burn, the amount of energy released is the calorific value. Whether it is solid, liquid or gas, you take 1 gram of coal, burn it. How much energy is released? Okay, accordingly it is the calorific value. Now, this calorific value also can be classified as high calorific value and low calorific value. These are the values given here. From the chart you can get what is the calorific value. One. Now, there are two types of calorific value called high calorific value and low calorific value, or gross calorific value, net calorific value. What is that? You take some fuel, burn it, and after burning, the amount of energy released is measured. Without any type of processing, if you allow the gas mixture, that burned gas mixture to release into the atmosphere, then it is called net calorific value or low calorific value. Okay, just allow the gas mixture that is produced to escape into the air. Then whatever calorific value you get, called the net calorific value. There is another one called gross. What is that? After burning, the amount of heat energy released. Along with that, another parameter will be added up. That is heat of condensation of water vapor that is present along with the fuel vapor. Fuel burning, after the fuel burning, the flue gas, that is you are allowing into the atmosphere. There, this flue gas mixture that contains moisture, the moisture will release some latent heat producing liquid droplet. So some additional heat energy is released. So that's why the calorific value will be called high calorific value or gross calorific value. Could you understand the difference or not? In one case, you are not doing considering the latent heat of condensation of water. And in other case, you are accepting that. In one case, you are not considering that. Other case, you are considering that. Which one? The heat of condensation of liquid droplet produced by condensation of water vapor, moisture. Where from the moisture is coming? By fuel burning. Whenever you burn some fuel, carbon dioxide and water vapor is must. Okay, may not be any other thing, but carbon dioxide and water vapor must be there. Along with that, there may be some nitrogen dioxide, some sulfur dioxide, maybe or may not be. But water vapor and carbon dioxide is must, and carbon monoxide also. Because if there is a complete combustion, then you get carbon dioxide, and if you get incomplete combustion, you get carbon monoxide. But along with that, moisture is must. Okay. Now this moisture, are you allowing it to directly go as a steam? If you do that, then you are getting net calorific value. And in other case, you are allowing this moisture to condense in the form of liquid droplet. So some extra
some additional energy is released. That is heat of condensation of water droplet. The water, moisture gets condensed into liquid droplet. Some energy released. কি বুঝতে পারছো কি পারছো না? বাংলা বলবো, হিন্দিতে বলবো? हिंदी. अच्छा, सी यू आर बर्निंग सम, तुम क्या कर रहे हो, कुछ फ्यूल को बर्न कर रहे हो. फ्यूल बर्न करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, कुछ गैस मिक्स से मिलेगा. क्या गैस मिक्स है? कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, थोड़ा सा सल्फर ऑक्साइड्स, ये सब तो रहता है. इसके साथ बोलो मॉइस्चर तो होगा ना, मॉइस्चर भी मस्ट. जलाओगे कुछ तो मॉइस्चर बनेगा ही, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जला रहे हो तुम, हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर वेपर, CxHy ना. हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है, CxHy. तो C से बनेगा CO2 और H से H2, क्योंकि तुम तो बर्न कर रहे, जला रहे हो उसको, तो क्या बनेगा, वाटर वेपर. अभी सोचो डायरेक्टली तुम उसको जला दिया, जो भी गैस मिक्सर है उसको एयर में छोड़ दिया, उसी तरीके से करेंगे तो जो हीट निकलेगा उसका नाम नेट कैलोरी. और दूसरा तरीका ये है, वो मॉइस्चर जो बना उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग अलाउ कर रहे हैं. वी आर गेटिंग, उसमें से जितना हीट एक्स्ट्रा निकलेगा वो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं इसके साथ, तो वैल्यू बढ़ेगा ना थोड़ा सा. लैटेंट हीट तो कोई भी कॉन्डेंसेशन के लिए थोड़ा सा लैटेंट हीट तो रिलीज होगा. वो लैटेंट हीट का अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा होता है, तो उसका नाम है हाई कैलोरी वैल्यू और ग्रॉस कैलोरी वैल्यू. और वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो लो कैलोरी वैल्यू. अभी बताओ समझ में आया कि नहीं? जलाने के बाद जो मॉइस्चर बना इसको या तो हम लोग कंडेंस कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं. अगर कंडेंस कर रहे हैं तो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन पकड़ में आ रहा है, और उसको नहीं कर रहे तो लैटेंट हीट को तुम छोड़ रहे हो तो तुमको हीट कम मिलेगा ना. तो कैलोरी वैल्यू दो तरीके से होता है, हाई एंड लो. हाई मतलब उसमें लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट वी आर कंसीडरिंग, लो मीन्स वी आर नॉट कंसीडरिंग. बस. अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड फ्यूल, राइट? रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड फ्यूल मतलब गुड फ्यूल होने के लिए क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज नेसेसरी फॉर ए गुड फ्यूल. नंबर वन इज हाई कैलोरी वैल्यू. कैलोरी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इतना डिजायरेबल है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हीट जनरेट करना. तो कैलोरी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट देखो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर बात को समझो, इग्निशन टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको जलाना मुश्किल पड़ेगा. जो टेम्परेचर से जलता है, स्टार्ट होता है, उसका नाम इग्निशन टेम्परेचर. अभी इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो उसको जलाना मुश्किल पड़ेगा, और इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा तो खुद ब खुद आग लग जाएगा. दोनों ही तो खतरनाक है ना. एक में मुश्किल, दूसरी में डेंजर. एक में प्रॉब्लम, दूसरी में डेंजर. तो कैसा होना चाहिए, मीडियम. बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम. बहुत कम, जैसे कि सोचो पेट्रोल वेपर, वो तो आसानी से थोड़ा बहुत पेट्रोल में जार्किंग होगा तो आग लगा देता है. जानते हो एरोप्लेन का जो फ्यूल है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट कैसे हो जाता है, ज़्यादा जार्क हो जाएगा तो खुद बहुत आग लग जाती है और एरोप्लेन डेंजर में आ जाता है ना. तो लो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर की वजह से तो प्रॉब्लम होता है. और कोल का ये बहुत बढ़िया है कि कोल का इग्निशन टेम्परेचर हाई है तो खुद बहुत आग नहीं लगेगा. तो मॉडरेट होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर. बहुत ज़्यादा होना तो भी प्रॉब्लम है, मीडियम होना अच्छा है. लो ऐश कंटेंट, देखो जलने के बाद जो पड़ा रहता है वो है ऐश, राख. जलने के बाद जो पड़ा रहता है राख जो है उसका नाम ऐश. वो बहुत ज़्यादा होगा तो तुम्हारा वेस्टेज है ना, क्योंकि तुम जितना सोचो कि 1 टन कोयला लेके जा रहा है, कोयला लेके जा रहा है, उसको जलाने के बाद बहुत ज़्यादा अगर राख है तो वो तो कोई काम का नहीं हुआ, लेकिन उसको कैरी करना पड़ा ना, कैरिंग कॉस्ट पड़ा.
You have to transport it from here and there, and ultimately you are carrying lot of ash also. कोल के साथ है वो, तुम निकल नहीं पाया तो लेके जाना पड़ा सब कुछ, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा ना एस की वजह से. तो इट्स नॉट दैट गुड. लो एस कंटेंट होना चाहिए, राख ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर बर्निंग शुड नॉट बी हाई, इट शुड बी लो. इट्स अ गुड प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल. लो मॉइस्चर कंटेंट. मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर का क्या प्रॉब्लम है, मॉइस्चर तो खुद ही कुछ हीट जनरेट लेके उबेगा. इट विल कलेक्ट सम हीट एंड विल बी एवापोरेटेड. মেয়েগুলো যে পিছনে বসে বসে পড়বে এই জন্যে সামনে আসেনি, তাই তো মনে করে কি বুঝতে পারে নাকি? ময়েশ্চার গেট কন্ডেন্স. হ্যাঁ, when you burn some fuel, this moisture, তাহলে এই পরীক্ষাটা কি করে দেবে? এগুলোকে তো পড়তে হবে না, না পড়লে তো হবে না. देखो ये मॉइस्चर कंटेंट का क्या बोल रहा था, मॉइस्चर कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो इट विल रिड्यूस द कैलोरीफिक वैल्यू. ये मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी हाई, इट विल रिड्यूस द कैलोरीफिक वैल्यू. क्योंकि मॉइस्चर तो भाप बन के उड़ जाए लेकिन उसका हीट वो तो वहीं से लेगा, तो हीट कटौती हो जाएगा, उसमें हीट में कटौती हो जाएगा, सो भी लो कैलोरी वैल्यू घट जाएगा. राइट, तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अच्छा, बिल्कुल नहीं हो तो, एकदम ड्राई है तो अच्छा है कि खराब है? सपोज द फ्यूल इज कंप्लीटली ड्राई, कोई मॉइस्चर है ही नहीं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत ज़्यादा डास्ट उड़ेगा. ठीक है, तो बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भीगा नहीं होना चाहिए. 5% मॉइस्चर कंटेंट ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं. मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लेस देन 5%. बिल्कुल जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पाउडर उड़ेगा, धूल डास्ट उड़ेगा. तो इट शुड बी कंट्रोल्ड. दैट्स व्हाई मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लो बट नॉट जीरो. मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लो बट नॉट जीरो. এতটা দেরি কেন হচ্ছে? এত দেরি কেন? বাস লেট কর, তুমি লেট করেছো, আগের বাস ধরতে হবে. नो हार्मफुल कॉम्बशन प्रोडक्ट. देखो जलने के बाद ये भी तो रिक्वायरमेंट है कि कोई हार्मफुल केमिकल ना निकले. हाँ, ये भी तो डेफिनेटली कंडीशन है कि हार्मफुल केमिकल ना निकले. तो इसलिए इसको कहते हैं नो हार्मफुल कॉम्बशन प्रोडक्ट्स. बिल्कुल जीरो ना हो, कम से कम मिनिमाइज्ड होना चाहिए. व्हाट आई एम डिस्कसिंग, गुड प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल. क्या कम होना चाहिए? नंबर 1 कैलोरी हाई होना चाहिए. नंबर 2 मॉइस्चर लो होना चाहिए, जीरो नहीं. जीरो होने से प्रॉब्लम है. एस कंटेंट लो होना चाहिए और इग्निशन जो टेम्परेचर वो मीडियम मॉडरेट होना चाहिए. एंड लास्ट ऑफ ऑल हार्मफुल ज़्यादा केमिकल ना निकले, क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल केमिकल निकलेगा इट इज बैड फॉर हेल्थ ना. सो बेटर दैट्स व्हाट शुड नॉट बी देयर. कॉम्बशन कंट्रोल और भी पॉइंट है. कॉम्बशन कंट्रोल, देखो एक बार आग लग गया तो उसको कॉम्बशन का कंट्रोल भी होना चाहिए. अनकंट्रोल वे से बर्न होगा तो इट विल गिव रिस्क, हाई हैजर्ड. कुछ चीज़ें होता है जो एक बार जलने के बाद उसको रोकना मुश्किल है. देखा है ऐसा कभी? मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. जो बनाना लीफ होता है ना, ड्राइड बनाना लीफ में कभी आग लगाया या देखा आग लगाने के लिए? ड्राइड बनाना लीफ जो होता है, कला पता, अगर उसको आग लगाओगे ना अनकंट्रोल हो जाता है. बहुत सारी हीप, सोचो एकदम हीप है, उसमें तुम आग लगा दिया, रोकना मुश्किल है उसको. बहुत फास्ट जलता रहता है, अनकंट्रोल्ड. कुछ घास होता है उसको भी आग लगाओगे, बेना घास है ना, बेना घास ड्राई हो गया, उसको आग लगाओगे ना तो एकदम अनकंट्रोल फ्लेम हो जाएगा, सेकेंड फ्लोर तक जाएगा, उसका फ्लेम हाइट सेकेंड फ्लोर तक चला जाता है. रोकना मुश्किल है, दैट्स अनकंट्रोल. दैट इज नॉट डिजायरेबल. कंट्रोल्ड होना चाहिए. जो बर्निंग, तो के कंट्रोल बर्निंग बोलो तो कौन सा फ्यूल का बहुत अच्छा कंट्रोल बर्निंग कर सकते हैं? कोक, चारकोल बहुत अच्छा जलता है, लंबा टाइम तक जलता है, लेकिन वो
ज़्यादा फ्लेम नहीं बनाता. फ्लेम इज डेंजरस ना, फ्लेम कम होना चाहिए, फिर लंबा लंबा फ्लेम होगा तो प्रॉब्लम. अच्छा, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी. फ्यूल भी ऐसा भी होना चाहिए जो मिलता है, नहीं मिलता तो बात करके फायदा क्या, जो मिलता ही नहीं उसके बारे में बात करके फायदा क्या. सो ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, राइट. ईज ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, रखना लेके जाना, दिस आर पार्ट ऑफ लाइफ ना. कहाँ रखेंगे, कैसे लेके जाएंगे. सो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो देखो, ऑल प्रॉपर्टीज आर गुड, ऐसा कोई तो फ्यूल है ही नहीं दुनिया में. सम गुड एंड सम बैड विल बी ऑलवेज देयर. सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज देखो, इजी टू ट्रांसपोर्ट. कोयला ट्रक में भर के लेके जाओ, ट्रेन में भर के लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें आग नहीं लगेगा खुद ब खुद. आग लगाना भी मुश्किल है, टाइम लगेगा आग लगने में. उतना आसानी से तो एक मैच स्टिक जल के डाल दिया उसमें जला के तो जलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो, वो खुद बुझ जाएगा, मैच स्टिक्स बुझ जाएगा. दैट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, फायर हैजर्ड नहीं है. कन्वीनियंट टू स्टोर विदाउट एनी रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन. कोयला कभी बास्ट नहीं करता, इट नेवर एक्सप्लोड्स. सो सॉलिड फ्यूल के बारे में सोच रहा हूँ, तो उसको आसानी से रख सकते हो, लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो लो. हाँ, कोयला तो उसे उठाओ लेके जाओ, और क्या करना है, खोद के निकालना है. उसके लिए जितना मशीनरी चाहिए, खोद के निकालने की जो मशीनरी चाहिए वो तो चाहिए होगा. पॉजेज, इसे देखो कोयला का बिजनेस इधर कितना अच्छा होता है. जो लोग कोयला का बिजनेस करते हैं ना दुर्गापुर में, सब मल्टी मिलियनियर हो गए. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो, बिजनेस प्रॉफिट इज वेरी हाई. समटाइम्स लॉफुल, समटाइम्स अनलॉफुल, बट बोथ इट इज बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल बिजनेस. देखो कोयला का बिजनेस करो तो ज़्यादा पैसे मिलेगा, नौकरी से ज़्यादा. पॉजेज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, पॉजेज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. कोयला का इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट ही है. नॉट ओनली कोयला, आई एम टॉकिंग सॉलिड फ्यूल, कोल, ये सब इग्निशन टेम्परेचर मीडियम. अभी देखो डिसएडवांटेज, सॉलिड फ्यूल का एस कंटेंट ज़्यादा होता है. एस कंटेंट ऑफ सॉलिड फ्यूल इज हाई. सॉलिड फ्यूल का एस कंटेंट हमेशा ज़्यादा होता है. एस कंटेंट मतलब जलाने के बाद जो रहता है. हीट इज वेस्टेड ड्यूरिंग कॉम्बशन. जब कोई भी सॉलिड फ्यूल को जलाओगे तो चारों तरफ हीट फैल जाता है. हीट विल बी स्प्रेड एट ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस. दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो थर्मल एफिशिएंसी ऑलवेज लो. Do you know what is the thermal efficiency of coal into thermal power plant? 38%. 30 to 40%, not more than that. Okay, so thermal efficiency will be low. Clinker formation, माने clinker means lump. Solid particles join together forming huge lump. That is called clinker formation. Dala dala हो गया. That is clinker. Combustion operation cannot be controlled easily. इसको कॉम्बसन का इसका पॉइंट का मीनिंग क्या है. देखो, एक बार थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट हुआ, उसको स्टॉप करना मुश्किल है, और एक बार स्टॉप करोगे तो फिर से स्टार्ट करना भी मुश्किल है. देयर इज नो स्विच ऑफ सिस्टम. कोल बर्निंग फर्नेस, देयर इज नो स्विच ऑन. बंद कर दिया फिर स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होगा. गैस ओवन नहीं है. कोयला का जो ओवन है वो गैस ओवन जैसा नहीं है. उसको अचानक स्टार्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया, नहीं चलेगा. स्टार्ट करोगे तो स्टॉप नहीं कर सकते, स्टॉप करोगे तो स्टार्ट नहीं कर सकते. हाँ, जब तक फूल है ये तो उसको ऑफ कैसे करोगे, पानी डाल दोगे. स्टॉप करने का तरीका क्या होगा, पानी डाल देंगे, क्या करेंगे, पानी डाल दोगे तो तुम्हारा फार्नेस फूट जाएगा. नहीं, प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा. आग में अगर पानी डाल दिया बहुत ज़्यादा धुआं धूल निकलेगा, नंबर 1. नंबर 2, वो जो फार्नेस है वो डैमेज हो जाएगा. तो मतलब स्टॉप तो नहीं कर सकते. एक बार स्टार्ट कर दोगे तो जब तक फ्यूल चल रहा है उसमें जलते रहेगा. तो दैट इज ए प्रॉब्लम. डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल. एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी में मिलेगा. कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग इज हाई.
because carry and transportation cost everything is high. लो कैलोरी वैल्यू, सॉलिड फ्यूल का कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता है. Excess of air for complete combustion. You need lot of air. Complete air blower will be required. Blower continuously air supply will. Otherwise, it will not be complete combustion. Cannot be used as internal combustion engine fuel. गाड़ी का इंजन में नहीं चलेगा. कोयला से गाड़ी चल रहा है, ऐसा होता है? देखा है ना? वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ. It is already still there. Oh, heritage property. Darjeeling toy train, it is still there. But is it inside the engine? Just think. Is it inside the engine? It is inside some furnace. The heat is applied to boil the water. Steam produced. The steam is running into the engine. स्टीम का धक्का लगने से गाड़ी आगे बढ़ता है ना? स्टीम का धक्का लगने से गाड़ी चलता है. दैट इज स्टीम इंजन, नॉट कोल इंजन. सो दिस फ्यूल, कोल और कोक कैनॉट बी यूज्ड एज ए कॉम्बशन फ्यूल इनसाइड द इंजन. इंजन का अंदर नहीं चल सकता. क्यों? बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ एश विल बी प्रोड्यूस्ड. डिस्पोजल ऑफ दैट एश इनसाइड द इंजन विल बी डिफिकल्ट. अंदर जलने के बाद बहुत ज़्यादा राख रह पड़ेगा, उसको कहाँ से निकालेंगे? तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं होता है. लिक्विड फ्यूल एडवांटेज, हाई कैलोरिक वैल्यू. लिक्विड फ्यूल का कैलोरी वैल्यू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसका कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. बर्न विदाउट फॉर्मिंग डस्ट एज क्लिंकर. लिक्विड का कोई क्लिंकर नहीं बनेगा. क्लिंकर समझ गया ना? ढेला दैट इज क्लिंकर. तो लिक्विड का ढेला बनता है नहीं, तो इसलिए वो नहीं होता है. फायरिंग इज इजियर, मतलब आग लगाना इजियर. स्पार्क कर दो, आग लग जाएगा. स्पार्क, लाइटर जैसा स्पार्क प्लग, मतलब गाड़ी में है ना स्पार्क प्लग, गाड़ी में, बाइक में स्पार्क प्लग होता है. तो दैट इज फायरिंग इज इजियर. एंड ऑल्सो फायर कैन बी एक्सटिंग्विश इजीली. बहुत आसानी से बंद भी कर सकते हो. तो फ्यूल सप्लाई को बंद कर दो तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगा. कोयला जैसा नहीं. पेट्रोल को एक नोजल से जा रहा है, थिन स्ट्रीम, उसका कट कर दो, बंद हो जाए. इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप. बहुत जगह पे ना पाइपलाइन से पेट्रोल जाता है और तुमको टैंकी में भर के लेके नहीं जाना पड़ता. इट कैन बी गो थ्रू पाइपलाइंस. सो इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड सम मैन कैन इजीली रेगुलेट लार्ज नंबर ऑफ फर्नेस साइमल्टेनियसली. पाइप से सप्लाई हो रहा है, तुम जाके नॉब को बंद करो. एक आदमी 4-5 फर्नेस आराम से हैंडल कर सकता है. इसको बढ़ा दो, उसको कम कर दो, इसको कट कर दो, इस आराम से कर सकते हो. नॉट ओनली दैट, नाउ इट इज एडवांस mechanism has come. It can be done automatically also. That AI can regulate all the system together. एक ही पेशेंस से तुम एक आदमी बैठा है कंप्यूटर में, उधर बैठ के पूरा सीनरियो देख रहे हैं. जिधर जहाँ जरूरत है फ्यूल को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं. There is control, totally controlled system possible. लिक्विड में होता है. They can be stored indefinitely without any loss. Properly sealed element रखेंगे तो there will be no loss. If it is kept in a sealed element, there will be no loss. That means no leakage. Properly gasket system करके रखेंगे तो leakage will be not there. Flame produced by burning liquid fuel can easily be controlled by adjusting the liquid fuel supply. Flame also can be controlled. Liquid fuel supply, if you reduce, flame height also will be reduced. That means controlled delivery, controlled heat, everything controlled. But solid, not like that. Solid main problem, on off not there. On off not there. Liquid, we can have on off. Again you want, give spark. Don't want, switch off. Liquid fuel advantages: clean in use. In labor, loss of heat to chimney is very low due to greater cleanliness, less excess of air. You don't need that much of air also. No wear and tear of the gear bars. They can be used as internal combustion fuel. Liquid fuel disadvantage. Major disadvantage is leakage. लिक्विड फ्यूल का मेजर डिसएडवांटेज है लीकेज.
टैंकी में छेद है, पूरा लिक्विड बह जाएगा। दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर फॉर सॉलिड। सॉलिड का जितना बड़ा टैंकर भी लेके जाओ, उधर छेद भी है तो कोयला थोड़ी गिरेगा। हाँ, थोड़ा बहुत गिरा कभी तो प्रॉब्लम नहीं है हमारा, गिरने दो थोड़ा सा। इट विल नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो एंड इट विल नॉट गिव एनी ट्रबल ऑल्सो। रास्ते में थोड़ा सा कोयला गिरा है तो क्या हो, लेकिन पेट्रोल अगर गिरा है इट इज डेंजरस, इट कैन कैच फायर ना बाई इटसेल्फ। इट विल गिव बैड ऑर्डर, लिक्विड फ्यूल गिव्स बैड ऑर्डर। अच्छा, कॉस्टली स्पेशल स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लीकेज होने चांसेस है। ग्रेटर रिस्क ऑफ फायर हैजर्ड, efficient burning of liquid fuel, specially constructed burners and spraying apparatus are required. For efficient burning, we need much better spraying arrangement, nozzle system. And nozzle का एक बड़ा problem है. There is a very big problem for a nozzle. Clogging. बंद हो जाएगा, block हो जाएगा, block. That blocking or clogging that happens to nozzle. तो नोजल में, अच्छा तुम लोग पुराना दिन जमाना का केरोसिन स्टोव देखा था, उसमें ऐसा करके पिन करता है, देखा है कोई? हमारा बचपन में था, तुम लोग कैसे देखा पता नहीं देखना चाहिए। अच्छा, वो केरोसिन स्टोव जो है ना, पंप वाला एक स्टोव होता है और एक फ्लेम वाला स्टोव होता है। एक फ्लेम वाला जो है वो चारों तरफ वीक है, वीक। उस केरोसिन में डुबो के, उसको केरोसिन में डुबो के रखा है, तो दैट विल ऑटोमेटिकली कम अपवर्ड। बोलो उसका टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे आप आ रहा है, केरोसिन ऊपर कैसे आ रहा है? नीचे केरोसिन है डब्बा में, उसमें विक डुबो के रखा है, उसको जला दिया, स्टोव जल रहा है, राइट? तो आग नीचे से ऊपर केरोसिन कैसे आ रहा है? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट और साइंस बिहाइंड इट, उसके पीछे क्या साइंस है? कैपिलरी एक्शन। वो जो वीक है ना, वीक वो कपड़ा का है ना, कॉटन, तो कॉटन का अंदर बहुत सारे कैपिलरीज है, तो उसको डुबो के जब रखा है तो केरोसिन हमेशा ऊपर आ रहा है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी राइज सुना है? कैपिलरी राइज या नो? ये सुनो, नहीं सुना है? कैपिलरी देखा भी नहीं? वेरी फाइन ग्लास ट्यूब जैसा, एकदम हेयर लाइक नीडल लाइक ग्लासमेड ट्यूब, नीडल लाइक ग्लासमेड ट्यूब्स नहीं देखा है? फिजिक्स लैब में होता है, पानी में ऐसे डुबोगे, चरक से पानी ऊपर आएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज देखना चाहिए एक्चुअली, कैपिलरी होता क्या है, वी हैव इन द केमिस्ट्री लैब, चाहे तो दिखा सकते हैं। वेरी फाइन नीडल लाइक ग्लासमेड सम ट्यूब, बट दो ट्यूब बोलने से तुमको क्या दिमाग में आता है? ट्यूब, थिक कॉलम, राइट? बट दिस इज वेरी वेरी थिन, हेयर फाइबर जैसा। पानी में डुबोगे तो तुरंत पानी ऊपर आ जाएगा, ट्यूब का अंदर ऊपर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। तो इसमें भी वही काम कर रहे हैं। वीक जब डुबोते हो ना केरोसिन में, तो केरोसिन का कैपिलरी एक्शन की वजह से ये ऊपर आ जाएगा, इट कम्स अप। नाउ so choking or blocking or clogging of the nozzle is the major trouble for liquid fuel. You have different type of burner system, you have a spraying arrangement, everything nice, but if there is a blocking or clogging, then repairing will be comparatively clumsy. Cleaning and repairing will be maintenance. Cleaning and maintenance is required, otherwise it will be blocked and it will not work. Gaseous fuels, advantages. You know very well. Tell me, what are the advantages of gaseous fuels? क्या क्या एडवांटेज है? कैलोरी वैल्यू हमेशा हाई होता है, कैलोरी वैल्यू इज गुड फॉर गैसेस fuel, कैलोरी वैल्यू इज गुड। अच्छा, यू नो फ्रॉम पेट्रोल और डीजल दैट ऑटो वी हैव स्विच्ड इनटू सीएनजी ऑटो। आजकल सब सीएनजी ऑटो चलता है। अर्लियर इट वाज येलो ऑटो, ब्लैक ऑटो, येलो ब्लैक, नाउ इट हैज बिकम ग्रीन। So what is so green about it? उसमें इतना ग्रीन क्या है? उसमें कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, कोई, तो ग्रीन कहाँ से है? ग्रीन ऑटो बोलते हैं। इट इज कंपैरेटिवली सेफर फॉर द एनवायरमेंट। अकॉर्डिंग टू द लॉजिक इट इज कंपैरेटिवली सेफर देन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के तुलना में थोड़ा सा
less clumsy होता है, less polluting होता है. That is the thing. So this gaseous fuel, what fuel you are using in this CNG auto? CNG, compressed natural gas. This compressed natural gas is what? उसमें है क्या? What is there in this? More than 75% methane. Methane is more, which is lightweight gas, and it is compressed. Okay, compressed fuel. So that way it is stored in a liquid form or a compressed form, not liquid, compressed form. But whenever you open the valve, the gas comes out with a very high, good force, good amount of force. Okay, so huge amount of gas can be stored in a comparatively minimum amount of fuel tank size capacity. So these are the advantages of gaseous fuels. The gaseous fuels will have a good calorific value. Storage is there into some compressed way or liquefied. LNG, liquefied natural gas. There also we are applying lot of pressure and then liquefying it into a storage tank. CNG, in the compressed form the gas is stored. So the advantage is these are less polluting. Even in the kitchen we are using LPG. That LPG is the liquefied one, but whenever you open the knob, gas comes out, not the liquid. So we are burning what? Gaseous fuel. Maybe it is stored in a liquid form, but what we are burning? The gas. Gaseous fuel can be lighted very easily with a little bit of lighter or sparking. Gaseous fuel को आसानी से जला सकते हो, जलाना आसान होता है. Air supply separately not required. It will catch air from the atmosphere itself. So whatever air it will need, it will manage itself. You don't have to supply in a separate air. But for solid fuel, you have to supply air. But here, you don't need that. These are the advantages. Gaseous fuel is clean in use because after burning, whatever produced, that is also gas and it goes into the atmosphere. You don't have to manage for any cleaning. गैस जलने के बाद कोई रेसिड्यू नहीं रहता. There is no ash, no residue, nothing left. So it is a very clean one. Less polluting also because it produces carbon dioxide along with some amount of nitrogen dioxide, sulfur dioxide, etc. You can burn without heat loss. The heat can be targeted. It is not spreaded to the environment. Disadvantage of gaseous fuel. Very large storage tank required. Highly inflammable. Fire hazard is very high. Now calorific value, it is the amount of heat generated, as already I have discussed this, amount of heat released when a unit mass or fuel, volume of fuel is burned completely in air or oxygen. Now this high calorific value and low calorific value, that also I have discussed. It is the amount of heat released when unit quantity of a fuel burned completely in air and the combustion products are cooled to room temperature. Whereas low calorific value, we are not allowing it to condense at the room temperature, rather we are allowing it to go into the atmosphere directly. So there is a relationship. Low calorific value equal to high calorific value minus latent heat of steam. Now 587 calorie per gram is the latent heat for steam per gram. Now in this, a 9 into percentage of hydrogen by 100, because here 9 parts of hydrogen is present. According to this equation, actually 2 gram of hydrogen producing 18 gram of water. So in this 18 gram, if you just divide it by 2, mass proportion is 1:8:9. So every 9 parts of water contains how much percentage of hydrogen. So that way if you consider, so it is 9 into percentage of hydrogen divided by 100 come.
percentage calculation. So that way, low calorific value, 1 gram of hydrogen gives 9 gram of water. Okay, from this equation, 1 gram of hydrogen gives 9 gram of water, and so the latent heat can be calculated like this. So this is the calorific value calculation. Carbon burning is 8080. These are the specific values. Hydrogen burning 34500 per kg. If you burn 1 kg of hydrogen, then you get this much of kilocalorie energy. If you burn 1 gram of carbon, you get this much of kilocalorie of energy. That way, if we want to calculate how much is the energy generated, so it will be this much kilocalorie per kg. This is carbon, this is due to hydrogen, minus oxygen by 8 it is given because this is from the oxygen is there into H2O, so oxygen is also there, so this oxygen is 8 O by 8 plus 2240, it is coming from sulfur contribution, this is coming from sulfur. So this is the total formula, it is called Dulong's formula to calculate the high calorific value. This is the formula to calculate the high calorific value. If you don't understand, tell me. If you don't understand, tell me. This 34500 coming from hydrogen portion. This is carbon, hydrogen, minus oxygen because H2O contains some oxygen. So whatever H2O you are getting full is not hydrogen. So it is oxygen is not contributing towards the calorific value. Don't mind it. Oxygen is not contributing towards the calorific value. That's why this oxygen part you are removing. How much water you are getting from that, you have to remove the part of oxygen. And you have to calculate the part of hydrogen only. That way, this is the that hydrogen burning. So minus this. This oxygen will get some calorific value from here itself. It will produce water, na? So that's why it is deducted. The amount of oxygen there into water, that has removed some amount of calorific value. That's why this is deducted. And others are all added because these are giving some positive calorific value. Sulfur is also giving some value. Though sulfur is not good because it is polluting. So LCV equal to HCV minus 0.09H into 587. This is coming from this formula. Coming from this formula. So this is low calorific value equal to high calorific value minus 0.09H, okay, into 587 kcal per kg. And this H means how many kg of hydrogen present into that fuel. Proportion of hydrogen. See, it is written here, 1 part of hydrogen by mass gives 9 part of water and latent heat of steam is 587. So this much of latent heat will be reduced from the high calorific value. If you deduct this much of latent heat of steam, then you are getting low calorific value. The latent heat of steam, if you consider, then it is high calorific value, and if you don't consider, it is low calorific value. Again I repeat. Next is coal, solid fuel coal. I am going into details now. So far it was introduction. Now coming to the details. Okay, but I think the time is up for now, so we'll continue with the next class. EVS, yes.